नमस्ते सभी को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। आज हम मिल रहे हैं अमित जी से, मिस्टर अमित अग्रवाल। ही इज फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड he calls himself a student of life. Amit is an entrepreneur of a growing HR firm, and he has a degree in leadership in New Age Business from Wharton Business School, USA. A pranic healer with unique expertise for cleansing chakras. Chakras भी cleanse करते हैं आप. A Vedanta researcher, a spiritual life coach, and authored a book titled Consciousness in Business Leadership. That's nice. By 2021, Divine presented his life's purpose to him, which is infusing consciousness in primary education, known as CPE. This is the term I'm listening. The first time I'm hearing this. His human machine curated some games that are destined to enter the K-8 school curriculum by 2026. And he and his team calls themselves as We Are God with amnesia. Amnesia मतलब अच्छा काम करके भूल जाना, right? First of all, a very big thank you to you, Amit. आपने मुझे Thanks, Steve. टाइम दिया इतना. I just I'm very happy to see you right now, maybe not in person, but at least on the screen. You're in Delhi right now. I've got some questions for you. I just the term that CPE, which I heard, what is CPE and what are we trying to achieve through this, and what is the real objective of CPE? Can you please elaborate about it? Yeah, thank you. And good evening, everyone. Good morning, whatever time that you're seeing this. And thank you, Swati ji, for giving this opportunity to be able to convey this to a larger audience using this amazing medium of internet. So CPE, which stands for Consciousness in Primary Education. It's a project that started about 2 years back, where God enabled this body to identify certain areas where I can feel that uh, I happen to be doing something at the highest potential of my own self, uh, wherein I'm trying to address certain larger need of the planet today, using my own whatever spiritual wisdom that I have been able to in this body attain. Knowing that I'm a student for life, सीखते रहेंगे जिंदगी भर, और जितना सीखा है वो अगर वो राइट इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ अलाइंड है तो उसको आगे तक एज मेनी पीपल एज पहुंचाना एक हायर पोटेंशियल की नीड्स हो गई है. इट इज नॉट नेसेसरली एन इमोशनल और हॉबी या करंटली एनीमोर. सो सीपीई में क्या है कि इसके लिए मैं ये समझना पड़ेगा कि ये सीपीई है क्या, और इसकी नीड क्या रही है. तो उसके लिए अगर हम 2 कदम वापस जाए और समझे कि करंटली अर्थ की सिचुएशन क्या है एट द वाइब्रेशनल लेवल, एट द ह्यूमैनिटी लेवल. सो टुडे वी सी कि ग्लोबली अगर हम देखें क्या चल रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, Myanmar, North Korea, we see big human conflict mushrooming from various countries. आज की तारीख में हम 195 कंट्रीज हैं, करीब 100 साल पहले सिर्फ 93 कंट्रीज हुआ करते थे. डिवीजन बहुत बढ़िया है. वी सी दैट टुडे, चाहे हमारे नेबरहुड हो, चाहे हमारे घर में एक्सटेंडेड फैमिलीज हो, ऑफिस कलीग्स हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस दैट वी एक्सपीरियंस. देयर इज अ लॉट ऑफ feeling of feeling of race, uh, feeling of beating somebody behind. We live in fear, jealousy, hatred, whatever. Largely, so where is love? So that is the situation today prevalent on the planet. Or uh, हम ये जानते हैं कि in the recorded history of mankind, it has never been so bad that the kind of atrocities that we've been seeing today. So CPE is a attempt to address this in a very replicable and fast mode, and perhaps in a very, very smart way. I mean, I don't want to call this is the smartest way. I'm open to new ideas as a student for life. Uh,
So CPE as a project is aimed at primary education globally, but to begin with schools in Delhi, where certain games of oneness, ekatmata, will be infused from this academic session in all the 1,000 Delhi government schools. And also in the next 2-3 years, the same games of oneness will also go to all thousands of government schools in 4 more states, which is UP, Uttarakhand, Maharashtra, and also New York of US. Yeah. So briefly, this is what CPA is. Yeah, very briefly. Otherwise, it takes about half an hour to explain. But now I can also tell you the second part of your question where you asked that what are we trying to achieve? So we understood the problem and we had briefly talked about what is CP going to do in terms of activity, but what is the outcome that we're achieving or trying to achieve? So the outcome is, once again, for outcome, we have to understand that what are the other outcomes, or sorry, what are the other options to address the problem that I just stated? So So today, when we type on Google that what is the biggest challenge on the planet today, it will the answers you will find on various websites, starting from United Nations, IMF, which is International Monetary Fund, World Bank, World Economic Forum, and so on and so forth. All these websites do mention that the world's largest problem, the most prevalently found problem, are two. One is human conflict, and the other is climate change or climate threat. They both are the biggest planet problems on the planet today, which has created a stage of dark age or Kali or the lowest vibration that Earth can experience. Now, uh, to be able to address this, now uh, the at least my calling was towards human conflict, and so everybody has got their own understanding and calling and interest that how do they want to contribute in whatever fashion that they want to be able to reach up to their highest potential, not necessarily in comparison with anybody else, but our own better version every quarter, every year. So that's where I thought I wanted to work in that direction, where I can mitigate the human conflict that we see on the planet today. And to mitigate out of various spiritual mind-based activities, I found that ekatmata or oneness is a very specific antidote required for the current state of human conflict. So we see today a lot of spiritual organizations, a lot of social reformers, a lot of leaders, religious leaders, even some political leaders are talking about peace, love, harmony, trying to uh, give lectures, sermons. There are some courses here and there, private courses. There are some gurukuls. There are some religious schools all across the globe, which are also doing their bit to teach the simply, I would say, humanity, right? But we adults are not changing. Uh, we all know that after the age of about 10, maximum 15, a child or a teenage by that time has understood that he has to think dividedly. It means, what does it mean? It means that he has to think that he belongs to a particular country or a particular religion or a particular economic status or a particular or a person who's got a particular set of choices. So largely today we are divided by 4 different reasons. One is religion, the other is political boundaries or patriotism, the third is economic status, and the fourth is the difference of choices. Now, at our age, we are all conditioned so thickly, we are culturally conditioned so much that that making all adults unlearn all this is taking infinite time and infinite effort. Maybe even if, so today we are 8.14 billion people, out of which 63% people are adults. And when we trying to change this huge, humongous number, it is going to take maybe 500 years or thousands of years. There is no specific tool till now which can forcibly pull adults into a certain structured education with this agenda. Everybody's busy in their businesses, jobs, and whatever situation that they're in. So the education for the kids is the only set platform which is globally existing. Every school, sorry, every country has the school system, and the education is
enforced is the right word. So, so I think, though actually this answers your question, but I think I can further go on and tell you that, uh, and I'm going to tell you something not new. We all know that a lot of efforts are happening about on this agenda at the adult population level. And I also supported few organizations which were trying to awaken people to this reality that it is possible to live in Satyug or Atlantis, Utopia, golden age by living in love, peace, and harmony, and just being the flame of love for everybody. That's where uh, my calling, when I started working with adults and I found that it is not happening, that's where I thought maybe I need to work only at the only at the children's level, catching them young, where I need to do something about oneness. Is it I that did, this is the way, was the reason that you chose CP instead of the adults? Is that yeah, so? yeah, yeah, for sure. We all know that, we learn बचपन में सिखा दिया तो सीख जाएंगे, नहीं सिखाया तो नहीं सीखेंगे, जो सिखाएंगे वही बनेंगे. Mhm. So in an organized way, the CP has the potential to reach perhaps all 195 countries, though it may take about 50 years. I will come back in the next life and see that, and you too. Yeah, But the process has started. yeah. So I'll tell you something which I did not do anything about, but that is important for all of us to know that there is something which is already happening in about 5 states in India, which was started from Delhi in 2018. It is called Happiness Curriculum, which is being taught in all the 1,030 schools in Delhi today. Every morning, 8 a.m. to 8:30 a.m., there is something called Happiness Class, which happens in 2019. So it's such a big thing that in 2019, when U.S. President Donald Trump and his wife came to India, they also attended that class. Uh, Today, we have about 9 crore links on internet about this program called Happiness Curriculum. 4 more states have taken it up in the last 3 years, which is UP, Uttarakhand, Maharashtra, and New York of US. So I do not have the exact latest information uh, that I have these states completely implemented this course called Happiness Curriculum in their schools as well or not. But this year, max in next 12 months, it will be implemented because the translation work is happening from Hindi to English and Marathi. And what is it that was written K8? What does that really mean? Okay, yeah. So K8 is the school system where the curriculum is designed to keep the first 8 years of study. In K10, it is for 10 years. K12 is usually for 12 years. So educationists and pedagogists use this terminology. You mean to K8. say first to eighth standard? Is that K8? K8. Yeah, First standard to eighth standard. yeah, yeah. Okay. So my focus is only to look at K8 system and not dilute the energies by also covering those children who have reached the class 9th. Because that because I think I'm letting them go. I think these people who have grown to the age of about, let's say, 15 are not going to be the immediate target audience of CPE, because though there is a big target, but it is very important. Like when you go on a ladder, you see a CD or a staircase, but you first see the entire journey, but you take only the first step in the beginning, and we do not even see the second and the third step in the beginning. Hmm. एक बार टारगेट देखा, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस पहले कदम पे, ऊपर देखेंगे तो गिर जाएंगे. Yeah. जैसे So कभी this, ये when there is a lot of fog and you're driving, जितना लाइट दिख रहा है वहां आगे चलो, वैसे कुछ हो गया समझो. yeah, yeah. Knowing the final target as well, एक Yeah. बार देख लेते हैं उसको, फिर बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए, एक एक स्टेप, वन बाय वन. लेटर में पहला कदम, पहली सीढ़ी पे पहला कदम. आप इसमें कराते क्या हो एग्जैक्टली? कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे उसके बारे में, एलाबोरेट करना चाहेंगे? विल यू एलाबोरेट अबाउट इट? व्हाट इज इट? वननेस का मतलब आप बताना, बोलना चाहते हो कि हम सब एक हैं, हम लोग विभाजित नहीं है, डिवाइडेड नहीं है. ये सब हमको, हमारी अंतरात्मा को पता है, लेकिन हमारे कल्चरल कंडीशनिंग में हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि कंपटीशन करना है, फर्स्ट आना है, दूसरा से आगे निकलना है. पर ओरिजिनली वननेस का मतलब हम सब एक हैं. और इसके कई प्रमाण हैं, जिसमें छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो मेरे इस घर में, मेरे आसपास ऑफिस में, जो मैं सांस ले रहा हूँ, वो किसी ना किसी के द्वारा अभी 2 मिनट पहले ही छोड़ी गई थी.
I have inhaled some air which was exhaled by somebody else. So उनका material मेरे अंदर, and we are connected. Now, when we are connected, anything wrong with that air or my air will affect both of us. One more example: when we die, we get decomposed. We get decomposed into the soil, or agar cremation hai, to we give it, once again we get decomposed into the soil, or maybe we can get evaporated to an extent to atmosphere. But what happens after that? उसी soil से plant बनता है, उसी plant को फिर हम खाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं. So body का एक element or atom is also getting recycled. So people who have, so what my body is made up of is of people who had died earlier, for example, because in the entire biological ecosystem वही atoms घूम रहे हैं. So जो decompose होके soil में गए, they became plant, and then I consumed that plant and I'm made of those plants, and which originally came from the earlier material which was taken from the earlier body. This is ऐसे the बहुत first सारे, time I'm hearing about it. I never thought it that way. It's like, yeah, I'm sure. Meditation may, you get these downloads and some illustrations, and when you sit in thoughtlessness or transcendental meditation. And there are more examples. I mean, for example, we know that if we hurt somebody or we see somebody getting hurt, even a jallad, to some extent, mm, it may appear that he's liking it. But the antaratma of everybody knows there is not a pleasurable vibe or a moment to witness. So when somebody is going through pain and agony, we feel pain and agony. This is the deeper reality. चाहे आउटसाइड में हम एक्सप्रेस कुछ भी करें या हम बिल्कुल इग्नोर करें, पर रियलिटी है. Likewise, if somebody is getting lot of happiness and bliss, अगर हम जेलस ना होते, जो ओरिजिनली जब जैसे हम बच्चे थे, तो हमें खुशी ही होती. बट वंस अगेन कल्चरल कंडीशनिंग सिर्फ कंपटीशन और रेस सिखाती आई है, और अभी भी यही सिखा रही है. So originally, what we were born with this wisdom that we are born. and small kids really don't discriminate. I've seen that when they are playing, even if they are like को तो having कोई फर्क नहीं पड़ता, once any अंदर हम खेल. quarrel, they'll come again in some time. थोड़ी देर में एक हो जाते हैं, कितना भी झगड़ा भी करे तो बच्चे तो इसलिए सच तो में. बोलते हैं भगवान बच्चे का रूप होते हैं और हम उनको फिर पोल्यूट करते हैं. तो वो बच्चा जब खेल रहा है 2 साल का, उसको सामने वाले के इकोनॉमिक स्टेटस से, लुक से, जेंडर से, एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता किस कंट्री का उससे. That That's is true. the kids are living in this satyug stage, and I think if we understand that this is what we were originally, we can also within a day start living in satyug. So satyug is not going to happen perhaps in a way that there'll be doomsday, एक दिन प्रलय आएगी और 24 घंटे या एक दिन में कुछ हो जाएगा, एक साल में नहीं. I think slowly a lot of people have already upgraded themselves. वो लोग सत्युग में रहने लग गए हैं जो इन चीजों से बाहर निकल गए, और उसके बाद हमारे कर्तव्य ये भी बनता है कि हम इस चीज को और फैलाएं. ये जो प्रकाश है, जो समझ में आई है बात, इसको आगे करें. तो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन से एक्चुअलाइजेशन की जर्नी. एक ये ज्ञान मिल गया तो इसको अंदर रखना नहीं है, इसको आगे जितना हो सके ज्वाला फ्लेम की तरह, एक लॉ की तरह आगे उसको यूज करना है और बढ़ाना है. फैलाना है. हाँ, और आप वो काम कर रहे हो इस वक्त. आप भी कर रही हैं. हर एक इंसान जो इस आपका पॉडकास्ट है और आप इस लाइन में हैं, आप भी अपना सेशंस करती हैं फॉर पीपल टू कम टू ब्रिंग देम आउट फ्रॉम द लोनलीनेस. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, हार्डवेयर नहीं है. मतलब चित्त के लेवल पे काम कर रहे हैं, खाली ट्रांजैक्शनल हेल्प नहीं है. एनजीओ जैसे हैं हमारे कई सारे, कई लोगों के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल हेल्प है. खाना खिलाना, शेल्टर देना, इन सब की भी जरूरत है. बट सॉफ्टवेयर यानी कि ये अध्यात्म, यानी कि ये माइंड वर्क, ये जीने का पर्पस, तो ये सब भी जरूरी है. एंड दैट्स माय पर्सनल कॉलिंग हैज बीन. That's good. That's really nice. आप मैंने ना आपसे जब बात की थी, when I had a conversation with you, you were talking about the like you play some games with those kids. Can you just like give one example कि किस राइट. तरह से आप वो करते हो? How is it practically done? बहुत बढ़िया. या ये बहुत अच्छी, क्योंकि दिस एंटायर सब्जेक्ट ऑफ changing the tomorrow's fabric of the world, which will start from the children of today, is very close to me. I will not say my heart, but overall me, everything of me. Um,
So 2 साल पहले I started doing something called WDS, which is weekly Diksha sessions, where I told my kids that I want to sit with you once in a week on a Sunday for 1 hour at least. So I knew there'll be resistance. Key, what is it, Papa? But I told them that if I'm your father, do I have this much of humble authority and loving authority that I can snatch 1 hour of your important time once in a week? Am I asking for too much? They said no. I said, and I will probably talk about things which 20%, 50% things you will not probably understand, though I'll try my best to talk some relevant stuff. And it may also so happen that you may not like it, you may get bored, you may think that it is repetitive, but I still need your permission. You can think whatever. बच्चे बैठते हैं But आपके? बच्चे yes, बैठते yes. हैं? So, इसलिए बैठते बिकॉज पहले से ही अपनी वहां इस डिस्कशन में अपनी ईगो को दबाना वो बहुत जरूरी था। इस इसको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं परोसना था कि ये एक जबरदस्ती जिद है और आपको सुनना ही पड़ेगा विद कंप्लीट अटेंशन, वेरी सीरियसली विद द बैक स्ट्रेट। नो, so that would have not been the right way to do it and possibility. They would have found reasons को डिले करना, ये करना है। अभी एक हफ्ते में इनफैक्ट जब मस्ती में बात करते थे ये बोलते हैं कि यार पापा को सुनना पड़ेगा आपको आज फिर से 1 घंटे के लिए, अब क्या करें। एंड सो आई मेक इट वेरी फन फिल्ड एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम कि अगर हम ये करते हैं और यू विल फाइंड द रिजल्ट एंड द इफेक्ट आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट, उससे पहले नहीं फर्क पड़ा पता लगेगा। और ऐसा ही हुआ है। अब इस बात को 2 साल हो गए। पहले मैं उनको हर एक पापा बोलता है, हर एक पेरेंट बोलता है अपने बच्चों को कि क्या खा रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स हैं, कैसे दोस्त हैं, कितना इंटरनेट है, कितना मोबाइल है लाइफ में, घर ढंग से रखा हुआ है कि नहीं, व्हाट इज द डिसिप्लिन। पहले थोड़े बहुत इश्यूज थे, मैंने इश्यू से बोलने बंद कर दिए about 2 years back when I started this session. And today, आज की तारीख में उन issues को बात करने की जरूरत ही नहीं है because those have disappeared. क्योंकि Wow. instead of giving a transactional level instruction, ये करो, A को B करो, B को C करो, C को D करो, कितना कितना पढ़ाओगे? इससे अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लेवल का लाइफ को जीने का तरीका सिखा दिया जाए अगर, जिसके लिए हफ्ते में 1-2 घंटा बहुत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पास और भी चीजें पढ़ने के लिए, स्कूल का करिकुलम है, दोस्त हैं, पढ़ाई है। सो टुडे, आज की तारीख में मुझे ये नहीं बोलना पड़ता कि किस टाइम उठ रहे हो, कितने दोस्त, क्या इंटरनेट, कितना मोबाइल, कितनी आंख में पेन, everything is vanished because they've understood. So I'll tell you what are the subjects that I talk about. For example, the purpose of life, the definition of happiness, definition of success, definition of career, breath work, chakra, Maslow's model to reach the highest potential, uh, 4 stages of human life, which is Brahmacharya, Grahastha, Vanprastha, Sannyas. What are the different religions? A bit of word global scene, a bit of understanding of what we are experiencing on the planet today, experience a power of words, how to inculcate attitude, how to inculcate gratitude, how to have discipline, and so on and so forth. So we repeat these sessions. So once in about 5-6 weeks, एक सेशन का रिपीट होने का नंबर आ जाता है. And I've done it for about 2 years now. Remarkable difference using all this. So there are a lot of, so in terms of content, there are a lot of links on YouTube. Whatever need that you type, you will figure out. Applicate spirituality for kids or mind work for kids, life skill for kids. बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स के आपको मिलेंगे जो आपको रेलिवेंट लगे, आपसे रेजोनेट करे, उसको पहले खुद देखें, फिर बच्चों के सामने उसको 5-10-15 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, वो चलाएं, उसके बाद अपना भी तरीके से समझाएं कि जो आपकी मेच्योरिटी कहती है, टू सपोर्ट योर व्यूज, so that it becomes an interactive session and not just a movie session. आप Yeah. इस तरह से कुछ कर रहे हो कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी वो गीली मिट्टी को जैसे जितना अच्छे से ढाल सकते हैं उसको उस वक्त बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं. यू कैन गिव इट अ प्रॉपर शेप till the mud is still wet, right? You're बिल्कुल doing it सही that सब। way. बट एक जी जी। क्वेश्चन एक और दिमाग में आ रहा है, अमित जी और सरनेम अग्रवाल, आई नो, सॉरी फॉर दैट, मतलब नॉट सॉरी फॉर दैट बट द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज, कभी आप उनको अपने रिलीजन के बारे में नहीं सिखाते? नहीं। यू नेवर फील लाइक डूइंग सो? नो हमें ऐसा नेवर। लगता है ना हमारा देखिए, कल्चर है, हमें उसे बताना चाहिए. नहीं. ये हम क्या, इसके लिए समझना पड़ेगा कि हम क्या है। हमारा कल्चर, हम तो चले छोड़िए, हमारा कल्चर क्या है। हमारा कल्चर सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टे इन दिल्ली, मैं सिर्फ अपने कल्चर की सीमा दिल्ली के अंदर की ही क्यों सोचूं।
why should I just think of about 1% or 0.1% area of the geography of the planet Earth? फिर हम और बड़ी बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का ही कल्चर क्यों सोचूं, या फिर और बड़ी बात करते हैं कि सिर्फ भारत का ही कल्चर क्यों सोचूं। यस, हम जानते हैं कि हम देवभूमि है, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान निकला है भारत से हजारों सालों से पहले, और आज की तारीख में इंडियन एंशिएंट सिस्टम और विजडम सिस्टम में पूरी काबिलियत है पूरे वर्ल्ड में सत्युग लाने की। बहुत अच्छी बात है ये, इतना तो पता है बच्चों को, पर एट द सेम टाइम इसका करे क्या? अब क्या करना है इसका? अब ये देखना है कि हाउ कैन दिस इन्फेक्ट larger system which is outside India. So, and same for the religion. So it is not true that the entire wisdom lies only and only in one single religion. I don't want to take what is the religion that I belong to, but even my religion or every other religion, I personally think may not have the capability, may not have the capability. And some other religion may have a different way of expressing the same thing which my religion is also saying, but maybe my religion did not use the right word or right language. Maybe, for example, जैसे अद्वैत वेदांता कुछ लोग जानते हैं, जिसमें ड्युअलिटी नॉन ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसी चाइनीज फिलॉसफी में है यिन एंड यांग। ठीक है। कुछ लोगों को अद्वैत वेदांता शायद समझ में नहीं आया होगा या नहीं आए, शायद उनको यिन एंड यांग समझ में आ जाए। या राइट। ऐसे ही मैंने जितनी भी स्टडीज करी है, देयर आर 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन जिनका ज्ञान बहुत प्रोफाउंड है, ऑलमोस्ट एज मच एज इंडियन एंशिएंट वैदिक सिस्टम। आई हैव नॉट रिसर्च इनफ, बट वो 4 सभ्यताएं कौन सी है? साउथ अमेरिका, इजिप्शियन, इंडियन एंड चाइनीज। आपने सुना होगा ताओइज्म, जेनिज्म, जेडियन। या तो और भी कुछ है। हम सभी इंडियंस को ये भी देखना चाहिए कि और भी क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस में इतना ही डीप प्रोफाउंड विजडम बेस्ड ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान है कि नहीं, मेरे ख्याल में है। पर ठीक है, इसलिए इस बारे में, क्योंकि ये तो वर्ल्डली थियोरेटिकल सिस्टम्स की बातें हैं, ये तो आप किसी भी धर्म या कंट्री से हो, एक कॉन्शियसनेस का बटन सब में है, अगर ऑन होगा तो पूरा ऑन हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और नेशन। ट्रू, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी दैट आप जो काम बाहर भी कर रहे हो, जो बच्चों में एकात्मता लाने की कोशिश कर रहे हो schools में, so many schools all over Delhi as well as now it's going to other states as well, other 3-4 states and out of India as well, I would say. One more thing is it's not that you're different outside and someone else at home. You are trying to inculcate that at home as well. I think that's something phenomenal. बहुत बार ये काम करते करते ना घर निग्लेक्ट हो जाता है, तो आपने दोनों ड्यूटी, आई वुड से अपने दोनों घर की भी और बाहर की भी ड्यूटी ठीक से निभाई। एंड या आज अच्छा, थैंक यू अमित जी, इतना आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन जाने के पहले जाने के पहले कोई आप कोई छोटा सा मैसेज जो भी ऑडियंस इस वक्त तक देख रही है, जो भी ऑडियंस देख रही है उनके लिए, इन जनरल जो पब्लिक देख रही है, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी, उनके लिए अपनी तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहोगे? बातें तो बहुत सारी है, बट आई थिंक इनिशियली मैं सभी लोगों से ही पहला एक ही बात बोलता हूँ कि समाज में हम सबको एक सिस्टम जरूर चाहिए जिसमें कि पॉल्यूशन ना हो। 3 चीजें होती है, पॉल्यूशन ना हो, जब हम बाहर जाएं तो हम सेफ फील करें, हमारे कंधे से कोई बैग न खींच ले, और तीसरा ये चीज होता है कि हमारी माताओं बहनों को बहुत इज्जत की नजर से सेफ्टी वाली फीलिंग मिले। चाहते तो सब हैं, 99 नहीं शायद 100% चाहते हैं कि आंखों में देख के पूछा जाए कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। 99% लोगों का आंसर शायद हम सबको मालूम है। तो अकाउंटेबिलिटी में पहला एक स्टेप, जो पहला स्टेप मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, वो ये है कि जो भी मैंने एक सेकंड पहले बात करी कि ये जो विभाजन, डिवाइडेड मेंटल स्टेट बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, इन अबाउट 95% पीपल, उसको हटाने के लिए एक छोटा सा स्पिरिचुअल विजडम, वो है यिन एंड यांग चाइनीज फिलॉसफी में और इंडियन वैदिक सिस्टम में अद्वैत वेदांता, जो ये कहता है
जो ये कहना चाहता है कि हर एक ऑपोजिट कंट्रास्टिंग थॉट और बिलीफ सिस्टम के इंसान को एग्जिस्ट होने का हक है। अब वो जरूरी नहीं कि वो ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं अंग ये कहता है कि दिस यूनिवर्स इज ड्रिवन बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस which work against each other, but they need each other to coexist. For example, what is the opposite of light? Shadow. But can shadow appear without light? The answer is no. Likewise, what is the opposite of shadow? Light. It means that every contrasting and opposite belief system has a complete right to exist, because without their existence, our own thought would have not existed in the first place. So ऐसा करने से, सोचने से सिर्फ हमें एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी होती है ऑफ द ऑपोजिट थॉट एंड बिलीफ सिस्टम। अब ये नहीं कि हम उसको गले लगा ले और उसको भी फॉलो करें, उसको एम्ब्रेस करें, उसको सपोर्ट करें, बट कम से कम हमारे अंदर का जो बहुत एक्सट्रीम होता है कि हाउ कैन पीपल डू इट, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस तरह की जो जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, वो शांत होना सबसे पहला स्टेप है। और वो शांत हो जाएगा जब दूसरे वाले को वही अपने घर में जैसा है वैसे एक्सेप्ट करे। ये पहली पहल होगी टू बी एबल टू बिल्ड सत्युग पीस एंड हार्मनी। उसके बाद जर्नी इज अ लॉट ऑफ जर्नी इज देयर अहेड। इट इज समथिंग लाइक, मैंने जितना सुना है गुरुओं से, अनेकांतवाद। अनेकांत मतलब अनेक, एक नहीं अनेक, कि एक ही चीज को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल तो होते हैं। एंड जरूरी नहीं कि मतलब कॉइन सिर्फ इसी तरह से दिखे, इससे भी मतलब इट कैन बी सीन फ्रॉम नॉट जस्ट टू, मे बी more than that, you can या have more than two views for that, the same thing, and that is fine. Mm. Yeah. एब्सोल्युटली सेम। Yeah. Thank you for this. It's been थैंक यू। insightful to talk to you. I'm really happy to meet you, Mr. Amit. प्लेजर। Yeah. I hope the audience who have like who have been through this, who have seen this, they also get that insight. And thank you for watching. And thanks a lot, Amitji. Thank you Thank you. again. Thank you, audience, as well. And thanks to Yeah. you as well. Keep doing Yeah. this work. Take care. Goodbye. Bye. Sarvam Brahmasmi. Yes.